6.25 फिर से आया लेफ्ट, ये एक्चुअली आपका 6.6 मीटर है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है जो आपका 6 मीटर है। इसको जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि ये जो फॉर्मूलाज होता है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम डिराइव करते हो, वो आपको एक्चुअली वेक्टर देता है। लेट्स प्रूव इट। अब इसमें ना हम डायरेक्टली टी इक्वल टू 3 बिठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी वाज 5, 3 माइनस हाफ 2, 9, 15, 9, 3 5 15, 2 2 কেটে গেল 9, তাহলে 6 মিটার। ইউ সি this is giving you 6 meter, and we have also understood it. Yes, it will be giving you 6 meter because vector means it will only be giving you the final and initial point. So whenever you are using those formulas, this motion, I mean, these three formulas or four formulas, make sure that these are basically giving you vector quantities. And these have been derived utilizing the concept or keeping in mind that the acceleration are constant. Okay. Now, why have you solved this problem? This has multiple reasons. ये जो आपका, I mean, yeah, I mean, you can also solve using the graph. Yes. Now let's discuss this. Why are we discussing this problem? ये जो प्रॉब्लम आपने किया था, इसको हॉराइजॉन्टल प्लेन में आपने किया था। इसको आपने 5 मीटर पर सेकंड से राइट में भगाया, और पीछे आपने इसको 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन देके रखा था। तो हमने क्या देखा, कुछ हद तक ये जाएगा, जाके स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन पीछे काम कर रहा है। अब यही सेम प्रॉब्लम हॉराइजॉन्टल से लेके इसको वर्टिकल प्लेन में कर दो। एक्सेलरेशन आपसे आपको देना नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट आएगा क्योंकि जी आ जाएगा। तो यही प्रॉब्लम अगर आप एक पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड से, और नीचे आपका जो एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा वो है 10 मीटर पर सेकेंड। Now this is nothing but motion under gravity. This is motion under some given acceleration. This is motion under gravity. This is motion under gravity. Done. तो वही सेम प्रॉब्लम जो अभी हम लोगों ने किया, सेम कॉन्सेप्ट, सेम थिंग, सब कुछ सेम, सिर्फ उसको हॉराइजॉन्टल से लेके वर्टिकल में कर दो। जब आप उसको हॉराइजॉन्टल से लेके वर्टिकल में कर दोगे, वो सेम प्रॉब्लम आ जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, अब इसमें से जो भी होता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल द डिटेल्स, वी ऑल नो दिस। फॉर एग्जांपल इसका एच मैक्स कितना होगा, लेट मी जस्ट डिराइव। सो व्हाट डू यू मीन बाय एच मैक्स? 0 u square minus 2g h max, u square by 2g is your h max। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, जाने का टाइम इसको ug, सॉरी u/g, आने का टाइम भी u/g, considering that there is no drag force or any kinds of air drag it is experiencing, तो जाने का टाइम भी u/g, आने का टाइम भी u/g। अगर वो एयर ड्रैग एक्सपीरियंस करेगा, जो हम बाद में एक प्रॉब्लम अगर टाइम मिले तो करेंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा, which we'll discuss later। अगर जाने का टाइम उसका वेलोसिटी आई मीन u/g है, और आइडियल कंडीशन में आने का टाइम भी u/g है, तो इट इज 2u/g। और आने के अगर उसमें ड्रैग है तो ये चेंज हो जाएगा। जाने का टाइम u/g हो सकता है, लेकिन आने का टाइम या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, लेकिन u/g नहीं होगा क्योंकि उसमें ड्रैग काम कर रहा है। तो आने का और जाने का अलग हो सकता है, बट गिवन एन आइडियल कंडीशन इट विल बी 2u/g। ओके, सो अच्छा, एक और था डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, जो कि आपको पता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, u प्लस ए बाई टू 2n-1। ओके, again, no point of discussing this now। We have discussed already motion under gravity, and we have also discussed about the projectile motion up to a certain extent with the equation of trajectory. So I'll now move ahead directly to projectile motion, okay, instead of solving more problems here because I am actually running behind। Okay, let me do just quickly discuss something related to projectile। Just a minute। हाँ, before I proceed, let me just quickly discuss one thing। As I was discussing this, so इसमें टाइम लगता है आपका जाने में u माइनस जी इंटू टी, और आने में u/g। टोटल टाइम इज 2u/g। लेकिन अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस है, इस तरीके का प्रॉब्लम भी आ सकता है। अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस है, इफ यू हैव एयर रेजिस्टेंस, व्हाट विल you have? If you have air resistance, then you know that anytime your mg is acting downwards and there is also a resistive force, so this particle is falling, as this particle is falling,
what will happen? Because of air drag, up restoring force will be acting upward, जो आपका ऐसे आता है माइनस के वी। तो जो आपका ओवरऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा वो हो जाएगा एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस के वी। तो एक्सिलरेशन आपका आ जाएगा एक्सिलरेशन आपका आ जाएगा जी माइनस के वी बाई एम। Now, as you can see, there will be a time coming when this will be equals to this. और ये जब होगा तब हम क्या बोलते हैं, net force on the particle is zero. Now, whatever velocity with which the particle will be moving is known as terminal velocity. और उसको आप कैसे निकालोगे? अगर आपको निकालना है तो just for the sake of understanding, dv by dt या mg minus kv by m, तो dv mg minus kv 0 to v terminal क्यों? Because we are considering that at this point the velocity whatever it will be achieved because of the fact that the ports have been same. Or at any time if you want to understand the velocity, तो ये आपका आ जाएगा 0 to t dt by m। बाकी इसका आगे का सॉल्व वी कैन डू इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल इसका। यस, হ্যাঁ হ্যাঁ এমজি বাই কে হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি টার্মিনাল ভেলোসিটি এমজি বাই কে হবে। বাট অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট তোকে যদি ভেলোসিটিটা বের করতে বলে যে ফাইন্ড দ্য ভেলোসিটি অ্যাট এনি টাইম টি, আই মিন by that at any time t means let's say at that time the particle has not yet achieved the terminal velocity. In that case your this expression is slightly complicated, mg by k e to the power sum আসে বেসিক্যালি এটাকে সলভ করলেই চলে আসবে। তো ওই হ্যাঁ 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 what I'm saying is the problem that we are discussing of motion under gravity. In ideal condition, if you throw a particle up, it will go up. Time taken is u by g. Or আসার সময়ও it will have the same condition, same environment. So it will be having u by g while coming down. That's why you say total time of flight is 2 u by g. But what will happen if there is a air resistance? And if the air resistance is working like this, let's say minus kb, means it is changing with velocity. It is a function of velocity. Now when the particle has coming down, is mg is downwards, means weight is downwards, is force or restoring force minus kv is acting upwards. So at any instant while the particle is coming down, at any instant the net force that is acting on the particle is mg downwards, kv upwards. So ma equals to mg minus kv, a equals to g minus kv by m, and then if you solve it you will be able to find out a relation between v and t at any time t. And what Shomil was saying and we are discussing is that what about a condition or a point where your mg which is acting downwards and kv which is acting upwards same. At this instant the velocity is a velocity which is known as terminal velocity or the velocity which will not be changing anymore, because आपके ऊपर कोई फोर्स है ही नहीं तो कहाँ से वेलोसिटी चेंज करेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो में आप मूव कर रहे हो। तो बिकॉज ऑफ विच द वेलोसिटी ऑफ द दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अच्छा, ये सब तो हो गया। नाउ वी हैव टू डिस्कस ग्राफ थ्योरी इज समथिंग। अच्छा, लेट मी जस्ट क्विकली नाउ डिस्कस अबाउट द ग्राफ थ्योरी एंड देन वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव काइनेमेटिक्स के बाद रेनमैन। अच्छा, देयर आर सर्टेन, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नो इशू, वी विल बी मेकिंग अप इन द अदर चैप्टर्स। So if I now discuss about graph theory, as Nilabju was mentioning, regarding graph theory, this is pretty simple now, because what do you know? Let me just quickly describe it. You know that the physical interpretation of definite integral is basically area under the curve. I have just said something. This is the proper mathematics. What if your function y is a function of x? If y is a function of x, and now if you are having a definite integral, that is integration f of x dx, x is equal to 1 to 2, what does that implies? This implies area under the curve. Why? Let's prove it. So whenever you are thinking of a definite integral, that definite integral will always be represent area under the curve. Why? Let's say this is my y and this is x, and you have a random function which behaves like this, which is f of x.
Now at x is equal to 1, let's say this, and x is equal to 2 is, let's say this. Now at any time, if you acha, you can see the curve is very curvaceous, no, the curve is changing heavily with x. But no matter how heavily it is changing, I can always find out a narrow region over which the value of y remain constant. That means what I'm trying to say is, I can always find out a narrow region. I can always find out a region like this. Or basically, I can always, part the whole thing into in terms of some small rectangles. And within that rectangular region, the y remain constant. You see, this is varying, I know, but the variation is very small. So on this, I can naively say y remain constant. Naively, I can say y remain constant. Or if it is not remaining constant, you can make this dx as narrow as possible. Hence, the conclusion is, no matter how curvaceous is your curve f of x, how much it is varying with x doesn't matter. You can always find out a dx which is so small that over that dx y ka change is very narrow, means always constant. So then that becomes, this is how much y, and this is what x. So if I now tell me what is the area of this rectangle, what will you say? dA. And what is dA? Arey dhur. Y dx. Acha. Now if I tell me the total area, you will say A total. How do you find? Summing it up. Summing it up is still integration. So 0 to A dA. और इसको आप कैसे करोगे? F of x dx. कहाँ से कहाँ तक? x1 to x2. So whenever you are thinking of a definite integral, remember this represents a area under the curve. Now इस concept को we will be utilizing in different parts. If I have a function where s is a function of, v is a function of t. If I have v as a function of t, if I have v as a function of t, what will you do? Then your area under, sorry, then the area under vt curve, है ना, total area under vt curve from t1 to t2, f of t dt, which is actually v dt, represents either distance or displacement. So if your curve is this, means इंटीग्रेट करने के बाद अगर ऐसा मिला, तो ये अगर एरिया A1 है और ये अगर एरिया A2 है, तो इट इज A1 माइनस A2, क्योंकि एक्स एक्सिस के मतलब पॉजिटिव वाई में आप लोगे एरिया को पॉजिटिव, क्योंकि एरिया इज अ वेक्टर, एंड नेगेटिव में आप लोगे नेगेटिव, मतलब यस, दैट इज हाउ यू विल बी मेजरिंग. सो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो जस्ट सम इट अप डायरेक्टली, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कीप इन माइंड द साइन कन्वेंशन. ओके. Similarly, if I have a as a function of t, then sorry, at adt is your velocity, because acceleration is dv dt. So your dv equals to adt, इसका integration will give you velocity. Again, area under the curve. Your velocity is ds dt. That is what you have already discussed. ds is equal to v dt. That is again area under the curve. Nice. But if you have st, then the slope of it will give you velocity because it is ds dt. If you have a vt, then the slope of it gives you dv dt, which is acceleration. Done. This much of the things we are supposed to just discuss. Okay. Now, just to understand, I'm giving you a x versus t. You have to draw the v versus t. I'm giving you a x versus t. X versus t. T1, T2, x0, x1. Draw v versus t. I have given you x versus t. Draw the v versus t.
It's very easy actually. Anyway, let me just discuss this. V is what? dx dt, the slope. यहाँ पे अगर आप स्लोप लोगे तो इसका स्लोप है पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव स्लोप घटेगा, पॉजिटिव वैल्यू घट रहा है, घट रहा है, जीरो हुआ, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर वो नेगेटिव में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता जाएगा। मतलब आपका वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, उसके बाद वो डिक्रीज करते करते एक जगह पे जीरो होगा, और उसके बाद इंक्रीज करता ही जाएगा। मतलब इट विल कीप ऑन, इट विल नॉट इंक्रीज, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया। सॉरी, why it will decrease? After that it is a straight line, na? It will remain constant, it will become constant, right Krishnardhan? Huh. So from t is equal to 0 to t is equal to 1, it will be the value, the magnitude of the velocity will be decreasing. It is positive, true, it is positive, but it will be decreasing, 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 and at this point it will be 0. After that, as you can see the curve, it will remain constant. Okay. Now if I discuss, yes, ebar, now let me to discuss this, how will the particle move. So if you see, let me to discuss the trajectory of the particle. This is y, this is x. এখানে দেখ, at t is equal to 0 the velocity is positive, তার মানে কি ম্যাগনিটিউডটা পজিটিভ, ম্যাগনিটিউডটা পজিটিভ মানে কি ও ডান দিকে যাচ্ছে। তা t is equal to 0 তে কোথায় আছে, x is equal to 0 তে, ধরে নে এখানে ম্যাগনিটিউড অফ ভেলোসিটি ইজ পজিটিভ মিন্স এই দিকে যাচ্ছে। তার কতদূর পর্যন্ত যাবে, কোন একটা টাইম পর্যন্ত যাবে, গিয়ে জিরো হবে। জিরো হবে মানে কি, তারপরে তার ঠিক পরের মুহূর্তে কি হচ্ছে, এখানে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এখানে টেকিং এ টার্ন, এখানে টার্ন নিল, কোথায় টার্ন নিল, এক্স ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান, এটা কত ছিল, এক্স ইকুয়াল টু জিরো। তারপরে কি হলো, ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, হয়ে তারপরে ভেলোসিটি নেগেটিভ, নেগেটিভ মানে এবার ভেলোসিটি নেগেটিভ, মানে এই দিকে চলে যাবে। at, আবার দেখ at t যাবে, গিয়ে আবার at t is equal to 0 2 তে x is equal to 0 হচ্ছে, মানে x is equal to 0 তে এই জায়গাটা t2, কারণ t is equal to 0 তে particle was at x is equal to 0, after that it start moving towards right, after some point when it will be at x1 it will be stopping, take a turn and come back. This is what it looks like. Acha, now হ্যাঁ ভি ভার্সেস ঠিক আছে, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি বলেছিলাম, বাট ইটস ওকে। ওটা তুই বললি যে একসময় কনস্ট্যান্ট, মানে প্রথমে কনস্ট্যান্ট থাকবে, সরি প্রথমে পজিটিভ থাকবে, কমে জিরো হয়ে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, তো জাস্ট ঠিক আছে, ওটা উই হ্যাভ ডিসকাস। আই এম মুভিং অ্যাড টু দ্য নেক্সট, মুভিং অ্যাড টু দ্য নেক্সট কি, আচ্ছা হ্যাঁ, ওই 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 আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। বাকি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি, কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন ওসব আর আমি ডিসকাস করছি না। হ্যাঁ, এবার আমি তোকে যেটা দিচ্ছি, এই প্রবলেমটা মাথা না ঘামিয়ে নেক্সট প্রবলেমটা একটু আমরা